Hi dear students, hope that you all are feeling well. Today we will discuss entitled theme Educational Implications of Classical Conditioning Theory. As we know that classical conditioning theory is propounded by Russian psychologist namely Ivan Pavlov. As dear students, classical conditioning theory is based on the environmentalistic approach. It means environment plays important role in order to shape the behavior of an individual. In today's lecture, we will focus on certain educational implications. The major educational implications of the theory are entitled as under. Number fifth, use of therapies. Therapy simply means treatment given to the individual in order to treat the particular ailment or disorder. The therapies are broadly classified into three categories, like physiotherapies, chemotherapies, and by and large psychotherapies. जैसे कि हम सब जानते हैं, physiotherapy is that therapy which helps us to treat the problems related to the bones and joints. पर्टिकुलरली जो सपोर्ट्समैन होते हैं, जब उन्हें खेलने के वक्त कोई भी इंजरी हो जाती है या मसल पुल हो जाता है, मसल पुल को ठीक करने के लिए या कोई भी इंजरी, चाहे वो नी इंजरी है, चाहे वो एल्बो इंजरी है, कोई भी इंजरी ट्रीट करने के लिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ वाई इन एवरी sports game there is the person whom we call physiotherapist. The physiotherapist is the person who gives the physiotherapy. I mean to say you, the person who treats the problems related to the bones and joints. Dear students, apart from physiotherapy, there is another therapy that is known as chemotherapy. Chemotherapy is that therapy which helps us to treat the disease like cancer. जब किसी पेशेंट में मेलेंगेंसी होती है तो मेलेंगेंसी को ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है. एंड कीमोथेरेपी इज गिवन बाय द पर्सन whom we call chemotherapist. The heavy doses of drugs, I mean to say you medicine, is ejected inside the body of the patient in order to treat the different types of cancers or malignancies. चाहे किसी पेशेंट में लिवर कैंसर होगा, लंग कैंसर होगा, ब्रेन ट्यूमर होगा, इंटेस्टाइनल कैंसर होगा, तो इन ड्रेडफुल डिजीज को ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है. Dear students, but our discourse is the psychotherapy, neither the physiotherapy nor the chemotherapy. Psychotherapy is that therapy which helps us to treat the mental health related issues or mental disorders. अगर किसी इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को ठीक करने के लिए साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है. द पर्सन हु गिव्स द साइकोथेरेपी वी कॉल द पर्सन साइकोथेरेपिस्ट. कीपिंग इन व्यू द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, वी यूज वेरियस बिहेवियरल थेरेपीज और टेक्निक्स in order to treat the various psychological problems, especially mental health related issues. There is one of the technique which is used by the behavioral psychologists, or especially it is used under the shade of classical conditioning approach. That technique is known as flooding.
Flooding is basically the technique in which an individual is directly exposed to anxiety producing situation or stimulus. For example, हेड्रोफोबिया, स्टेज फोबिया। यानी कि ये वो टेक्निक है जिसमें हम एक इंडिविजुअल को जो फियर्स और फोबियाज का विक्टिम है उसे डायरेक्टली हम एक्सपोज करते हैं उस सिचुएशन से जहां पर उसे फियर और फोबियाज पैदा हो जाते हैं और तब तक कंटिन्यूअसली करते रहते हैं जब तक कि फियर रिड्यूस नहीं हो जाएगा। आई मीन टू से यू फियर की इंटेंसिटी रिड्यूस ना हो जाएगी जब तक कि हम कंप्लीटली फियर और फोबियाज एलिमिनेट नहीं करते हैं। एंड दिस फ्लडिंग इज आल्सो नोन एज एक्सपोजर therapy, and moreover it is also known as systematic desensitization। यानी कि with the help of systematic desensitization we eliminate the fears, we eliminate the phobias and other mental health related issues are treated with the help of flooding। Dear students, this flooding technique is used एक्चुअली अंडर द शेड ऑफ काउंटर कंडीशनिंग। जब हम एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की काउंटर कंडीशनिंग करते हैं तो हम उस ऑर्गेनिज्म में जो फियर्स, फोबियाज या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको काउंटर कंडीशनिंग के जरिए रिड्यूस और एलिमिनेट किया जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कीपिंग इन व्यू द फ्लडिंग or its other synonymous names are systematic desensitization or exposure therapy. How this therapy will help to eliminate the fears and phobias among the learners। जैसे कि हम सब जानते हैं जो लर्नर्स होते हैं उनमें एक कॉमन फोबिया होता है। दैट फोबिया इज बेसिकली known as stage phobia or school phobia। These are the various phobias which are faced by the learner। Keeping in view the stage phobia, stage phobia is basically faced by the learners। एक लर्नर के पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी वो हेजिटेट करता है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उसमें डेवलप हो जाती है। द लर्नर फेसेस वेरी मच डिफिकल्टी in order to express in front of the audience। वो नर्वस फील करता है दूसरों के सामने। अगर एक टीचर बच्चे को कहता है कि आप क्लासरूम में खड़े हो जाओ और इस सवाल का जवाब दे दो तो उसे इंफॉर्मेशन पता होती है, सवाल का जवाब भी पता होता है, लेकिन वो नहीं दे पाता है। सो वी कैन से दैट द पर्सन और द लर्नर इज फेसिंग द प्रॉब्लम। दैट प्रॉब्लम इज नोन एज स्टेज फोबिया। अब हम इस स्टेज फोबिया को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? सो फार एज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज कंसर्न वी हैव टू यूज द टेक्निक। दैट टेक्निक इज नोन एज फ्लडिंग। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फ्लडिंग को हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं या हम इसमें सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करते हैं। मोर it is also known as exposure therapy। Now with the help of these techniques we can treat the phobia like the stage phobia। अब हम एक लर्नर को जो स्टेज फोबिया का विक्टिम है, जिसमें नर्वसनेस होती है दूसरों के सामने कहने से, जो ऑडियंस के सामने नहीं बोल पाता है, जो क्लासरूम में खड़ा होकर नहीं बोल पाता है, जब भी टीचर उससे कुछ सवाल पूछता है द लर्नर इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट और गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो इट मीन्स दैट लर्नर पर्टेन्स द प्रॉब्लम। दैट प्रॉब्लम इज नोन एज स्टेज फोबिया। तो इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए द लर्नर शुड बी कंटिन्यूअसली एक्सपोज्ड टू द सिचुएशन। आई मीन टू से यू टू द स्टेज। जब हम इसी लर्नर को जिसमें स्टेज फोबिया है कंटिन्यूअसली क्लासरूम में खड़ा करेंगे, सेमिनार्स पे खड़ा करेंगे, मॉर्निंग असेंबली में
हर दिन उसे एक एक टॉपिक देंगे, 2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का। सेमिनार्स में पार्टिसिपेशन करवाएंगे, सिंपोजियम्स में पार्टिसिपेशन करवाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता से ये बड़ी गैदरिंग में भी हिस्सा ले सकता है। एंड टाइम विल कम when the fears and phobias, I mean to say you, stage phobia will be completely eradicated, और उसमें जो stage phobia है वो completely खत्म हो जाएगा। This technique, dear students, is known as flooding. Now flooding cannot only treat the stage phobia. With the help of flooding, I mean to say you, systematic desensitization, or we can also say that exposure therapy. तो एक्सपोजर थेरेपी के जरिए हम और भी जो फोबियाज है, लाइक देयर इज वन ऑफ द फोबिया दैट इज नोन एज हाइड्रोफोबिया, या हाइड्रोफोबिया को हम एक्वाफोबिया भी कहते हैं। कोई शख्स ऐसा होता है या कोई इंडिविजुअल ऐसा होता है जो पानी से डरता है, तो किस तरीके से हम उसमें हाइड्रोफोबिया जो है वो एलिमिनेट करेंगे। With the help of same technique which is known as exposure therapy or systematic desensitization. Systematic simply means which is in the orderly pattern, यानी कि change is gradual. With the passage of time हम उसे expose different situations में करेंगे जो उसमें irrational fears पैदा करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता से जो हाइड्रोफोबिया है एक इंडिविजुअल में खत्म हो जाएगा। पहले हम उस इंडिविजुअल को जो हाइड्रोफोबिया का विक्टिम है उसे पानी के बकेट में हम उतारेंगे, तो दूसरे अटेम्प्ट में हम उसे पानी के छोटे से पिट में डालेंगे, और जब उस सिचुएशन के साथ हम कंटिन्यूअसली उसे एक्सपोज करेंगे, इन थर्ड अटेम्प्ट फिर हम उसे स्ट्रीम में उतारेंगे, और जब वो स्ट्रीम के साथ हम कंटिन्यूअसली उसे एक्सपोज करेंगे, फिर उसके बाद हम उसे आई मीन टू से यू गुली में उतारेंगे। यानी कि गुली मीन्स कि वो यानी कि नदी से बड़ी होती है, जिसमें नदी से ज़्यादा पानी होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता से हम उसे दरिया में उतारेंगे। जब एक इंडिविजुअल जो हाइड्रोफोबिया का विक्टिम है, जिसमें हाइड्रोफोबिया की टेंडेंसी है या उसे एक्वाफोबिया भी कहते हैं, जब वो अब दरिया में उतरेगा एंड टाइम विल कम, समंदर में भी खुद उतरेगा, तो इस तरीके से हम हाइड्रोफोबिया को दूर कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोफोबिया देयर आर इन्यूमरस फोबियाज लाइक ज़ूओफोबिया इज, लाइक हेमेटोफोबिया इज। ज़ूओफोबिया इज दैट फोबिया जिसमें इरेशनल फियर इंडिविजुअल में पैदा हो जाता है रिलेटेड टू द एनिमल्स, यानी कि जब भी वो एनिमल्स को देखते हैं, वो लोग जिन्हें ज़ूओफोबिया होता है तो वो भाग जाते हैं, उनमें फियर पैदा हो जाता है। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने हाइड्रोफोबिया को दूर किया है, स्टेज फोबिया को एलिमिनेट किया है, वी कैन आल्सो ट्रीट द फोबियाज लाइक zoophobia, acrophobia, हेमेटोफोबिया। हेमेटोफोबिया इज द फोबिया रिलेटेड टू द ब्लड, खून से डरना, या एक्रोफोबिया इज द फियर ऑफ हाइट्स। नाउ नंबर 6, कंडीशनिंग। Dear students, conditioning simply means some sort of habit formation. When we will develop some habits in an individual is known as conditioning. Now, how we can develop the habits among the learners? I mean to say you desirable habits, क्योंकि एक लर्नर में डिजायरेबल हैबिट्स भी हो सकते हैं और अनडिजायरेबल हैबिट्स भी हो सकते हैं। तो हमें कंडीशनिंग के जरिए एक लर्नर में डिजायरेबल हैबिट्स डेवलप करेंगे, और डीकंडीशनिंग के जरिए हम एक इंडिविजुअल में जो अनडिजायरेबल हैबिट्स है उन्हें हम एलिमिनेट करेंगे। कीपिंग इन व्यू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, it is the responsibility of the teacher to develop the healthy habits among the learners. We have to develop the life care skills among the children. For example, habits like how to make a brush, यानी कि डेंटल हाइजीन कैसे की जाती है ये बच्चों को सिखानी है। हाउ टू मेक ए नेल हाइजीन,
नाखून कैसे काटे जाते हैं, ये ट्रेनिंग भी हमें बच्चों को, छोटे बच्चों को देनी है। हाउ टू मेक ए बाथ, किस तरीके से हम नहा सकते हैं, तो ये ट्रेनिंग भी इम्पोर्ट करनी है। या कपड़े पहनना, या जूता पहनना, जूता निकालना, या ओवरऑल हाइजीन मेंटेन कर लेना। So these are called the basic life care skills, or how to clothe the clothes, कपड़ों को पहनना, कपड़ों को उतारना। This also comes in the category of life care skills. या अपना यूटेंसिल खुद साफ करना। And there are so many life care skills which we can develop among the learners. So far as conditioning is concerned, conditioning will help us to develop the desirable habits and eliminate the undesirable habits. For example, अगर बच्चों में बुलिंग का कैरेक्टर है, तो डीकंडीशनिंग के जरिए या काउंटर कंडीशनिंग के जरिए बुलिंग को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। या बच्चों में आई मीन टू से यू अब्यूजिंग है, बाय मीन्स ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स वी कैन एलिमिनेट द अनडिजायरेबल बिहेवियर लाइक द अब्यूजिंग। या बच्चों में थेफ्टिंग है, लूटिंग है, स्टीलिंग है, पिक पॉकेटिंग है, इन सब अनडिजायरेबल बिहेवियर्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड वी कैन डेवलप द I mean to say you desirable behaviors, like to teach the learners to become honest, to develop the honesty, punctuality, ethical concern, morality, to differentiate between good and bad, right and wrong, legal and illegal, pure and impure, justifiable and unjustifiable. These habits can be developed among the learners. जैसे कि हम सब जानते हैं, during the modern times, drug addiction is the global problem. Especially youth is the victim of drug addiction. और ड्रग एडिक्शन को भी हम डीकंडीशनिंग के जरिए, काउंटर कंडीशनिंग के जरिए एलिमिनेट कर सकते हैं। ड्रग एडिक्शन की वजह से एक यूथ की लर्निंग पे ही असर नहीं पड़ता है, बल्कि उसकी सेहत पे भी असर पड़ सकता है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर दैट टू एलिमिनेट द ड्रग एडिक्शन बाई प्रॉपरली कंडीशनड द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की टू इन्वॉल्व द डिफरेंट learners, especially the youth population, in different supports activities, in different co-curricular activities, so that every learner will become health conscious. This was all about the today's lecture. If you really enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.